energy. Pumped hydro storage electric power in excess of the immediate demand is used to pump water from a supply, e.g., lake, river or reservoir, at a lower level to a reservoir at a higher level. When the power demand exceeds the supply, the water is allowed to flow back down through a hydraulic turbine which drives an electric generator. The overall efficiency of pumped storage, that is, the percentage of the electrical energy used to pump the water is recovered as electrical energy, is about 70%. Pumped hydroelectric storage is the most economical means presently available to electrical utilities. It could also be used for storing electrical energy produced from solar and wind energy. There are relatively few suitable sites where there is a water supply at a lower level and a reservoir can be constructed at a higher level. But the use of natural or excavated underground caverns as lower reservoirs, now being developed, should greatly increase the number of possible sites. Pumped storage is an indirect method for temporarily storing substantial amounts of electrical energy by pumping water from a lower to a higher level. Pumped storage can be used in conjunction with electricity generating plants of all types, regardless of the energy source. In a pumped storage facility, the power generated in excess of the demand is used to pump water from a lower reservoir, e.g., a lake, river or underground cavern, to an upper reservoir. During periods of peak demand, when the power demand exceeds the normal generating plant capacity, water from the upper level is allowed to flow through a hydraulic turbine at the lower level. The turbine then drives a generator to produce electricity in the usual way in most pumped storage plants. The turbine generator system is reversible and can serve to pump water from the lower to the upper level, as well as to generate electricity. In the pumping mode, the generator becomes a motor, driven by electricity produced by a generator in the main plant, and the turbine then operates as a pump. Startup of the turbine, generator or reversal from motor, pump to turbine, generator requires only a few minutes, so that power could be restored after a short delay in the event of a failure in the main plant. The altitude difference between upper and lower water levels, i.e., the water head, in pumped storage facilities ranges from less than 30 meters to somewhat more than 300 meters. As a general rule, Francis-type reversible turbines are used, but for low heads propeller-type turbines are preferred. In the pumped hydro system, the high heads are desirable. Some topographies do not allow them, and thus pumped hydro systems are often classified as above ground, which includes the preferred high head and medium head and underground. In underground pumped hydro system, the upper reservoir may be at or near ground level. The lower reservoir is placed underground in natural caverns, old mines or other underground cavities. This type of system overcomes the requirement of a suitable topography. Such a system is shown in figure. In all systems, a reversible pump turbine or motor generator set is a principal piece of equipment. Pumped hydro, like compressed air, is a potential energy storage system suitable for large utility energy storage. It is the most developed and used of all storage systems. The principle behind pumped hydro is simple and follows the law of potential energy P, that is, the raising of mass to an elevation, height or head h. It is given by P equals G, rho, co, h, 1, where P equals potential energy, joule, sec, G equals gravitational acceleration 9.81 meters per square second, rho equals density, kilogram per meter 3, co equals flow rate, m3 per second. H equals vertical distance through which water falls, m.
Also P equals mgh, where m equals mass flow rate, kilogram per second, equals rho co the operating heads on the pump turbine. In the pumping mode HP and in the turbine generating mode HT are different and are made up of two components, each HP equals H plus H1, 2, and HT equals H1, 3. Where H is the static head of height and H1 represents the losses during flow conditions, which are different because of different flow rates. The pumping and generating powers are given by replacing the mass in equation 1 with the mass flow rate kilogram per second and using the proper head, or with PP equals rho Q G HP 4 and PT equals rho Q G HT 5, where PP and PT equals pumping and turbine powers, respectively. Watts, rho equals density of water, kilogram per meter 3, Q and Q equals volumetric flow rates in pumping and generation respectively m3 per second. The efficiency of pumped hydro storage plants is commonly from 65 to 75%. In spite of the loss of 25 to 35%, pumped storage can be economical. The stored water generates power at times of peak demand when it would otherwise be supplied by a gas turbine or diesel engine that is expensive to operate. On the other hand, apart from capital and maintenance charges, the costs of operating pumped hydro storage plants are small. Losses in a PHS, mechanical losses, motor and pump losses and turbine and generator losses. Frictional losses in pipes, head loss, flow losses, seepage and evaporation losses. Disadvantages of PHS, needed high altitude, large area. संभावित ऊर्जा, तत्काल मांग से अधिक पनपेड हाइड्रो स्टोरेज इलेक्ट्रिक पावर एक उच्च स्तर पर एक जलाशय के लिए निचली स्तर पर आपूर्ति, उदा, झील, नदी या जलाशय से पानी पंप करने के लिए उपयोग की जाती है। जब बिजली की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो पानी को एक हाइड्रोलिक टरबाइन के माध्यम से वापस प्रवाह करने की अनुमति होती है जो एक विद्युत जनरेटर को चलाती है। पंप किए गए भंडारण की समग्र दक्षता, यानी पानी को पंप करने के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का प्रतिशत विद्युत ऊर्जा के रूप में पुनर्प्राप्त होता है, लगभग 70% है। पनपेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज वर्तमान में विद्युत उपयोगिताओं के लिए उपलब्ध सबसे किफायती साधन है। इसका उपयोग सौर और पवन ऊर्जा से उत्पादित विद्युत ऊर्जा को संग्रहीत करने के लिए भी किया जा सकता है। अपेक्षाकृत कुछ उपयुक्त साइटें हैं जहां निचली स्तर पर पानी की आपूर्ति होती है और एक जलाशय को उच्च स्तर पर बनाया जा सकता है, लेकिन निचले जलाशयों के रूप में प्राकृतिक या खुदाई वाले भूमिगत गुफाओं का उपयोग अब विकसित किया जा रहा है। संभावित साइटों की संख्या में काफी वृद्धि होनी चाहिए। पनपेड स्टोरेज अस्थायी रूप से पानी को कम से कम उच्च स्तर तक पंप करके अस्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में भंडारण करने के लिए एक अप्रत्यक्ष विधि है। ऊर्जा स्रोत के बावजूद पनपेड स्टोरेज का उपयोग सभी प्रकार के बिजली उत्पन्न करने वाले पौधों के संयोजन के साथ किया जा सकता है। एक पंप स्टोरेज सुविधा में
मांग से अधिक की शक्ति को कम जलाशय, ओदा, झील, नदी या भूमिगत कैवन से ऊपरी जलाशय में पानी पंप करने के लिए उपयोग किया जाता है। चोटी की मांग की अवधि के दौरान, जब बिजली की मांग सामान्य उत्पादन संयंत्र क्षमता से अधिक हो जाती है, तो ऊपरी स्तर से पानी को निचली स्तर पर हाइड्रोलिक टरबाइन के माध्यम से बहने की अनुमति है। टरबाइन फिर अधिकांश पंप स्टोरेज पौधों में सामान्य तरीके से बिजली का उत्पादन करने के लिए एक जनरेटर को चलाता है। टरबाइन जनरेटर प्रणाली उल्टा है और निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक पानी को पंप करने के साथ साथ बिजली उत्पन्न करने के लिए भी पानी पंप कर सकता है। पंपिंग मोड में जनरेटर एक मोटर बन जाता है, जो मुख्य संयंत्र में जनरेटर द्वारा उत्पादित बिजली द्वारा संचालित होता है और टरबाइन एक पंप के रूप में संचालित होता है। मोटर, पंप से टरबाइन, जनरेटर से टरबाइन, जनरेटर या रिवर्सल की शुरुआत केवल कुछ ही मिनटों की आवश्यकता होती है, ताकि मुख्य संयंत्र में विफलता की स्थिति में कम देरी के बाद शक्ति को बहाल किया जा सके। पनपेट स्टोरेज सुविधाओं में ऊपरी और निचले पानी के स्तर यानी जल सिर के बीच ऊंचाई अंतर 30 मीटर से कम है 300 मीटर से अधिक। एक सामान्य नियम के रूप में फ्रांसिस प्रकार रिवर्सिबल टरबाइन का उपयोग किया जाता है, लेकिन कम हेड प्रोपेलर प्रकार टरबाइन के लिए प्राथमिकता दी जाती है। पनपेट हाइड्रो सिस्टम में उच्च सिर वांछनीय है। कुछ स्थलाकिक उन्हें अनुमति नहीं देते हैं और इस प्रकार पंप हाइड्रो सिस्टम अक्सर उपरोक्त जमीन के रूप में वर्गीकृत होते हैं, जिसमें पसंदीदा उच्च सिर और मध्यम सिर और भूमिगत शामिल होते हैं। भूमिगत पनपेट हाइड्रो सिस्टम में ऊपरी जलाशय जमीन के स्तर पर या उसके पास हो सकता है। निचले जलाशय को प्राकृतिक गुफाओं, पुरानी खानों या अन्य भूमिगत गुहाओं में भूमिगत रखा गया है। इस प्रकार की प्रणाली एक उपयुक्त स्थलाकृति की आवश्यकता को समाप्त करती है, जैसे कि सिस्टम को आंकड़ा में दिखाया गया है। सभी प्रणालियों में एक उल्टा पंप टरबाइन या मोटर जनरेटर सेट उपकरण का एक प्रमुख टुकड़ा है। संपीड़ित हवा की तरह पनपेट हाइड्रो एक संभावित ऊर्जा भंडारण प्रणाली है जो बड़ी उपयोगिता ऊर्जा भंडारण के लिए उपयुक्त है। ये सबसे विकसित और सभी स्टोरेज सिस्टम का उपयोग किया जाता है। पनपेट हाइड्रो के पीछे सिद्धांत सरल है और संभावित ऊर्जा पीई के कानून का पालन करता है, जो एक ऊंचाई या सिर एच के लिए द्रव्यमान को बढ़ाता है। ये P इक्वल्स GeQ द्वारा दिया जाता है। वन, जहाँ P इक्वल्स संभावित ऊर्जा जॉल सेकंड, G इक्वल्स गुरुत्वाकर्षण त्वरण 9.81 मीटर, S2 रो इक्वल्स घनत्व 3, QO इक्वल्स प्रवाह दर M3, S, H इक्वल्स ऊर्ध्वाधर दूरी जिसके माध्यम से पानी गिरता है M, VP इक्वल्स MGH जहां M इक्वल्स द्रव्यमान प्रवाह दर किलो, S इक्वल्स रो क्यू पंप टरबाइन पर ऑपरेटिंग हेड। Pumping mode HP में और में the turbine generating mode HT are different and are made up of two components, each HP equals H जोड़ H1, 2 and HT equals HH1. तीन, जहां H ऊंचाई का स्थिर सिर है और H एक प्रवाह की स्थिति के दौरान घाटे का प्रतिनिधित्व करता है, जो विभिन्न प्रवाह दरों के कारण अलग हैं।
द्रव्यमान और उत्पन्न करने वाली शक्तियों को द्रव्यमान में द्रव्यमान 1 में द्रव्यमान प्रवाह दर किलो s के साथ और उचित सिर का उपयोग करके या PP इक्वल्स रो Q के साथ दिया जाता है। G HP 4 और PT इक्वल्स रो Q नॉट G HT 5, जहां PP और PT इक्वल्स पंपिंग और टरबाइन शक्तियां क्रमशः वॉट, रो इक्वल्स पानी की घनत्व किलो M3, Q और Q इक्वल्स पंपिंग और PD क्रमशः M3, S में वॉल्यूमेट्रिक प्रवाह दर। पनपेड हाइड्रो स्टोरेज पौधों की दक्षता आमतौर पर 65 से 75% तक होती है। 25 से 35% की हानि के बावजूद पंप स्टोरेज आर्थिक हो सकता है। संग्रहीत पानी चोटी की मांग के समय शक्ति उत्पन्न करता है, जब इसे अन्यथा गैस टरबाइन या डीजल